Hello, Achu. Let's read out the questions. Question says, point masses m1 and m2 are placed at the opposite ends of rigid rod of length L and negligible mass. The rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it. The position of point P on this rod through which the axis should pass so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimal is given by. So here in this question, you can see कि दो पॉइंट मासेस है m1 एंड m2, उनको रॉड के दो सिरों पर रख दिया जाता है जिसकी लेंथ l की इक्वल है और रॉड एलिजिबल है और इस रॉड को इस तरीके से प्लेस किया गया है कि इट इज सेट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट टू द पोजीशन पॉइंट P। सो यहाँ पर हमें इस पोजीशन x को जो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है फाइंड आउट करना है ताकि इस पोजीशन P पर रॉड जो है सो अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस रोटेट कर सके विथ मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा नॉट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। by using the work energy theorem, work done is equals to change in kinetic energy. Change in kinetic energy means to say final kinetic energy minus initial one। एंड सेकंड हम यहाँ पर कंसेप्ट यूज करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस कैन बी गिवन बाय द मास इनटू r का स्क्वायर, जहाँ पर r विल बी द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस होगा। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द टू मासेस कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वी वुड से द मूवमेंट ऑफ inertia of the system, this can be calculated as I is equals to। सो देखिए यहाँ पर चूंकि हमें पास दो पॉइंट मासेस है m1 एंड m2, सो दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो सबसे पहले m1 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। सो हो जाएगा m1 इंटू रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P। सो वो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में m2 के लिए रेडियल डिस्टेंस हो जाएगा l माइनस x का होल स्क्वायर। Now we will try to write the kinetic energy. So here there is no translational motion, that is why the translational kinetic energy will be 0. There will be only rotational kinetic energy 1/2 I omega square, जहाँ पर I moment of inertia, omega angular velocity है। So this will be equals to 1/2 into moment of inertia of the system we have just found m1 x का स्क्वायर प्लस में m2 L minus fx का whole square. This would be multiplied by the omega square. So since we remember that work done is equals to the change in kinetic energy. So basically initially ये रेस्ट पर थे 1 second. So initially zero होगा kinetic energy, तो change in kinetic energy will be goes to equals to work done required। अब वो किसके इक्वल होगा, जो एक्सप्रेशन हमने अब फाइंड किया है दैट इज 1/2 m1 x स्क्वायर प्लस में m2 L माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर दैट टाइम्स ऑफ ओमेगा का स्क्वायर। सो फॉर द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट हम इस वर्क डन को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन x एंड इक्वेट करेंगे 0 फॉर minimum angular velocity omega naught। So this will be goes to, that is dw by dx will be goes to, so इसका डेरिवेटिव निकालना है यानी कि d by dx of into the bracket m1 x का स्क्वायर by 2 माइनस में m2 by 2 L माइनस x का होल स्क्वायर इंटू में ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और फिर इसको इक्वेट करना है 0 से। सो m1/2 कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विल बिकम ट्वाइस ऑफ x। सो दिस implies that 2 will get cancelled, only remains m1x प्लस में
डेरिवेटिव ऑफ L माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2L माइनस एक्स और 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस साइन इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, so minus minus will get plus m2 times of L minus of x, and then again derivative of minus x is going to be minus 1, while omega square will go to that side, become 0, so इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से। अब इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, so multiplieds will get m1x plus m2x minus में m2L, this will be equals to 0, so from here taking x to be as common, we'll get x is equals to m2L divided by m1 plus m2, and therefore this is going to be the required answer to our question. So this is the location of center of mass of the 2.2 masses. So according to given option, m2L by m1 plus m2, yani ki option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.